Hello, Rahul. Welcome to the podcast series of PrajaVaani. Rahul is an artist from Chhattisgarh, but we'll hear more from Rahul about him. So, can you please walk us through your journey in art first? Hi Kritika, thanks for giving me an opportunity uh, to speak about art at least. So I am Rahul Dutta. Is it fine, right? Like we can speak in Hindi and English both, Of course, yes, yes. No problem. है ना? So okay. So बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैं बेसिकली आर्ट से लेकर या आर्ट के थ्रू आई हैव डन सम एजुकेशन और मैंने कोई पढ़ाई किया है आर्ट को लेके. सो इट इज नॉट लाइक दैट. आई एम बेसिकली MBA ग्रेजुएट फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी. और उसके बाद मैंने अराउंड 10 साल मैंने नौकरी किया. आई वॉज इन टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड. आई वॉज इन completely hardcore sales. So I have never respected art. If you ask me about art, मैंने कभी आर्ट को उतना सा रिस्पेक्ट नहीं किया था बचपन में. तो बचपन में जैसे सभी लोग हम लोग जब बड़े होते हैं वी यूज्ड टू स्क्रिबल अ लॉट. जहाँ पे कॉपी मिला वहाँ पे कहीं भी जगह में कुछ बना दिए, अपना कलाकारी कर दिए. जो सब में हर बच्चों में आता था, मुझ में भी वही था. और माय फादर इज अ गुड आर्टिस्ट एक्चुअली. तो मैं जब बड़ा हुआ तो आई यूज्ड टू सी माय फादर. अभी तो एक्रेलिक पेंटिंग पेंट वेंट आ गए हैं. उस समय ऑयल पेंट हुआ करता था. ओनली ऑयल पेंट वाज द मीडियम. वाटर कलर मिलते थे लेकिन उतना अच्छा क्वालिटी नहीं था उस समय. तो मैं देखता था पापा को. माय फादर यूज्ड टू डू सीस्केप्स और बहुत सारे उन्होंने आर्ट वर्क किया था. तो आई यूज्ड टू सी हिम अ लॉट. तो उस समय भी एक्चुअली मुझे कभी आई नेवर थॉट कि आई विल बी गोइंग इनटू दिस फील्ड. मैं पढ़ाई करता था. पढ़ाई के साथ में आई वाज आल्सो इनटू म्यूजिक. तो मैं तबला वबला बजाता हूँ. एंड इट इज स्टार्टेड लाइक व्हेन आई आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सॉरी, व्हेन आई वेंट टू चेन्नई. चेन्नई में जाने के बाद मैंने जब अपना नौकरी स्टार्ट किया वहाँ पे आई डिडंट हैव मच फ्रेंड्स. इफ यू आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था, एक आध लोगों को छोड़ के. तो आई स्टार्टेड गिविंग टाइम इन आर्ट. मैं बचपन से, हाँ, वन वन थिंग वाज देयर. मैं बचपन से स्केच बहुत करता था. उस समय तो Oh, हमको उतना ज्यादा कलर्स के अवेलेबिलिटी नहीं हुआ करता था. सो आई यूज टू स्केच अ लॉट. पेंसिल से स्केच मैं बहुत करता था. तो चेन्नई में जाके ऐसा हुआ कि अपॉर्चुनिटी मिला कि फर्स्ट टाइम मैंने छोटा मोटा जो वर्क किया था. मैंने कैनवास, लाइफ में फर्स्ट टाइम कैनवास मैंने चेन्नई में जाके देखा था कि कैनवास होता क्या है. सो फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड. एंड चेन्नई में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड चोलामंडलम आर्ट विलेज. okay. So that place is known for many senior artists. They will reside there. They have their studio there. वो लोग वहीं वहीं पे रहते हैं, वहाँ उनका काम भी करते हैं. तो आई पर्सनली मैं वहाँ पे जाके उनसे मिला, उनके काम को देखा. मैं उनके काम को देखता था जाके. जब भी थोड़ा टाइम मिलता था आई यूज्ड टू गो देयर. उनसे परमिशन लेके कुछ देर बैठ के उनका वर्क को देखता था कि वो कैसे वर्क करते हैं, कितने फॉर्म्स होते हैं आर्ट वर्क के, कितने फॉर्म्स होते हैं. तो वो देखने के बाद मेरे में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया. देन आई शोड माय वर्क टू देम. तो उन्होंने मुझे देव गिवन मोटिवेशन टू मी. फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड. देन आई केम टू बैंगलोर. बैंगलोर में आने के बाद आई हैड माय ओन बिजनेस एज वेल. मेरा खुद का रेस्टोरेंट था. सो वहाँ पे मैंने बैंगलोर में आने का बाद मैंने कुछ छोटे मोटे एग्जीबिशंस किए थे. चेन्नई में भी मैंने बहुत लोकल एकदम कुछ कुछ एग्जीबिशंस किए थे. एंड बैंगलोर में आने के बाद आई डिड फ्यू एग्जीबिशंस simultaneously along with my business. So business was my first priority, art was my second priority. So
then it started from there. I did few shows in Mumbai Nehru Art Center, चेन्नई, बैंगलोर में भी चित्रकला परिषद में किया था, और भी कुछ कुछ ऑडिटोरियम्स आई हैव डन टू द लोकल एग्जीबिशंस एंड ऑल. So from there it started. Then I closed my business during Corona and all. My business, I had to shut my business, and then I completely came into this field. So there are still other many stories are there, but yeah, अगर मैं छोटा सा एक सारांश में बोलूँ तो from there I came to this field, and वहां से मैंने फिर 24/7 I was linked with art. अभी भी मैं completely मैं whatever I am doing I'm into art. Such a fantastic journey to hearing. So ये Thanks. बताइए कि what is your specialization in art, like कि किस तरह की आर्ट करते हो? देखिए मैं since मैं I was never gone through any kind of education, तो मेरे लिए like there are many patterns in artworks, है ना, जैसे applied art में बहुत सारे forms में we play with the designs and all. So I've never gone through that, so I didn't have much of idea. तो मैंने, since I had been to very small places, my birthplace was Tilda, which is comes under Raipur district. और उसके बाद I had been to Gujarat, I had been to Pune, I had been to Madhya Pradesh, Satna, I had been to Chennai, Andhra, Bangalore. So all these places I've lived. So I have seen many artworks and many type of artworks, but मैं जो मुझे जो अच्छा लगता है, what I am interested in, मैं जब भी कोई, बहुत सारे सभी आर्ट फॉर्म्स अच्छे हैं, all the art forms are good. There is nothing specific ये अच्छा है ये खराब है, all the art forms are good. लेकिन मुझे जो what attracts me is I attracted towards semi realistic work, little impressionism work. वो वर्क मुझे वाकई में अच्छा लगता है, whether it comes to portrait, whether it comes to landscape, whether it comes to architectural work. So if you see my work also, mostly I play with figurative, I try to play with figuratives or architectural, लेकिन मैं I do not go towards hyper realism. I keep it little semi realistic and impressionism work. Okay, that's interesting to know. That's really interesting. And so now coming to the actual motive of why we have this series or why are we talking today is to show a path to youngsters. I'm sure there are a lot of high school kids or college people or still working professional who wants to pursue art as a domain of work, as a profession. So how do students actually get into this profession, or how do they pursue this as a career option? See, first of all, one has to be very clear whether where they have to go. See, first mistake which I did, हम लोग जब बचपने में जब हमको चांस मिलता, हम लोग के समय में उतना फील्ड नहीं था, उतना गाइड करने वाला हमारे समय में ऐसा कोई नहीं था कि आप इस फील्ड में जा सकते हो या स्पोर्ट्स में जा सकते हो, ओके, या आर्ट कैन बी वन ऑफ द फील्ड व्हिच यू कैन थिंक ऑफ. दो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी काफी सालों से था, लेकिन हमारा एजुकेशन इस टाइप से डेवलप नहीं था कि हम अपार्ट फ्रॉम साइंस, मैथ्स, कॉमर्स हम लोग और कुछ सोचे. तो वी वर मीन्स हमको जो भी सोचना है वी हैव टू थिंक इन दैट वे ओनली. दैट वाज द ओनली करियर पाथ फॉर अस. लेकिन अभी जो है धीरे धीरे things are changing. Now India is coming very much ahead in the field of games, sports, in the field of arts, in the field of many things. Even आजकल आप if you see magicians, people are small kids, small young generations, they are coming, they are doing terrifically good in magic. So there are many paths are opening. Now the thing is to come into art field, पहले तो हमको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको कहाँ पे जाना है.
where we have to go. See, the mistake which I have done, मैंने बहुत late start किया. Not the mistake also, उस समय मुझे पता भी नहीं था उतना. So lately I came to know, yes, this is inside me. The art, it was always there with me. I never experienced, I never experimented also. So one has to first understand कि उनको क्या करना है, नहीं करना है. That is the first thing. Second thing is, ये सोचना भूल जाए कि आर्ट करने के बाद इमीडिएटली आपको 50,000 1 लाख का सैलरी मिलेगा. समवेयर यू विल गेट, और यू विल स्टार्ट अर्निंग like MF Hussain from MF Hussain sir from day one or after 1 year. That is not going to happen. So you should not compare yourself with any IT guy or any engineering guy. First thing, see, 2 into 2 हम लोग किसी को पढ़ा पढ़ा के ट्यूशन करा के 2 into 2 4 करा सकते हैं, लेकिन आर्ट में वैसा नहीं है. When we prepare any color tone, how many times of what all the color tones we are mixing, we also do not know. That is why वो जो भी वर्क पीस बनता है, when we create any artwork, that is a masterpiece. Okay, so second time we cannot create it. Even the artist who has done, he himself cannot get it. Okay, so when we speak about career, yes, career, one should think, because there are many streams into art. आप अगर ऑटोमोबाइल में जाएंगे, ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग, दैट इज एन आर्ट. इफ यू गो टू इंटीरियर, if you go to architecture, that is an art. If you go for medical, even medical में भी आपको biology, that is again you have to study art. Okay, so what are all the things um, in arts also there are many fields. So art is animation. आजकल तो animation का जमाना है. Animation, then textile designing. Okay, so many things are there where art is required. That website designing, website developers, they also have to understand the tones. कौन सा कलर, बैकग्राउंड कलर के साथ कौन सा आपका फॉन्ट का कलर जाएगा, that is also an art. So art is there everywhere, but हम लोग उसको समझना नहीं चाहते हैं, या तो फिर समझते नहीं. So it is a good field, it is a good career, but if you are determined कि आपको आर्टिस्ट बनना है, then start from day one. आपको BFA के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, to get a good entrance in any college, first वहां पे जाके कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा BFA में कि ऑब्जेक्ट स्केचिंग का ये करो वो करो. पहले तो आपको एक स्किल्ड आर्टिस्ट होना चाहिए, नॉट आर्टिस्ट, स्किल्ड पेंटर होना चाहिए. देन ओनली यू विल गेट एंट्रेंस इन एनी आर्ट कॉलेज, गुड आर्ट कॉलेज. उसके बाद जाके वहां पे the professors and every the senior artist, professor, senior student, they will guide you. Okay, so first be prepared कि ये सब, there will be many hindrances. It's not a very smooth journey, but it is a very good journey. I'm sure. And after knowing you for a couple of years now, I'm sure that it's a good career path. So we'll Yeah, talk yes. more about yeah. So we'll talk more into the nitty-gritties of pursuing art as a profession. So do you think there is a need for a formal training? You said that you have had a family background. Can you please repeat it once again? Yeah. So Can you do please you? repeat it once again? Yes, sure. So do you think there is a need for a formal training in art? See, it's a good question. Formal training, at one sense, it is required. At one sense, it is not required also, because MF Hussain was, sir was not gone through any formal training. Many artists are there nowadays. If you watercolor artists like Milind Malik, sir, he has not gone through any education or any. He has not gone through any college, art college. Vijay Biswal sir, he has also not gone through any art college. So it was just inside them, and but at the same time,
formal education is required at one point of time, because nowadays if you see abstract art, I'll just give you an example. एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हम लोग जब देखते हैं, हमारे दिमाग में क्या होता है, इसमें क्या है, एक कैनवास में यहाँ पे कलर मारे, वहां पे कलर मारे, और कुछ ब्राइट कलर से हम लोग अप्लाई किए, नाउ विल फ्रेम इट, इट विल कॉल इट एज एन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। ऐसा नहीं होता। उसमें भी, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में भी हमको कलर बैलेंसिंग, कलर एप्लीकेशन, लेयरिंग कैसे, ठीक है। सो देयर, उसमें भी सब्जेक्ट रहता है, उसमें आप दिखाना क्या चाह रहे हो, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट बनने के लिए भी आपको फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। सो बेसिक्स इज रिक्वायर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इवन मैंने जिनका नाम लिया सर, सीनियर सर, तो उन लोग का बेसिक बहुत स्ट्रांग है, दे आर वेरी प्रिंसिपली वेरी स्ट्रांग, स्टिल दे आर प्रैक्टिसिंग इट। तो फॉर्मल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, इट इज नॉट लाइक, हाँ हम लोग बोलते हैं आर्ट का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, ठीक है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई आल्सो डू एक्सेप्ट आर्ट का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, बट yes, formal training, if you say certification course, if you say, or if you study under some trained artist or senior artist, that is also fine, that is also an education only, need not to be you have to get a degree or diploma, whatever it is. तो अगर आपको उसमें करना है, go through it, go under some good artist, senior artist, उनसे सीखो प्रोसेस कैसा होता है, that is 110% required। अदरवाइज आप वही, आप क्या, एंड ऑफ द डे आप कोई भी एक वर्क को देखोगे, आई जस्ट आस्क यू, इफ आई शो यू पेंटिंग ऑफ माइन और एनीवन एल्स पेंटिंग, मैं आपको बोलूंगा ये वर्क को आप करो, मे बी यू आर गुड एट आर्ट, ठीक है, आप वो वर्क को कर पाओगे? एक फोटोग्राफ दिखाऊंगा आपको, आपको वो वर्क को कर पाओगे इमीडिएटली? नहीं कर इमीडिएटली पाओगे, बहुत मुश्किल है। बिकॉज यू विल एंड नॉट अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड। exactly, and even if I try to copy it, I don't think I will be able to put up to that mark, or for that matter nobody can be able to. या, Yes. yes, you have to understand from where to start and where to end and how to end. So that process you have to know. Right, I agree. Correct? Yes. है ना? So that is 100% required. Second thing is, अगर आपको करियर में, अगर आपको आर्ट टीचर बनना है, अगर आप इफ यू थिंक कि हाँ मैं किसी कॉलेज में आके आर्ट प्रोफेसर बनना, आर्ट टीचर बनना है, देन गो फॉर डिग्री कोर्स, डिग्री और डिप्लोमा, व्हाटएवर इट इज, Okay. देन इट इज फाइन। Okay, I understand. Yes. So next is, I want to understand that there are a lot of people posting their works on social media or becoming freelance artists. Okay. So I would call them like budding artists. So what is your advice for them? What do you say? See, if I'll keep a tag of budding artist, everybody is budding artist. एक बच्चा जब जन्म होता है वो बडिंग आर्टिस्ट, करेक्ट, वो हाथ से अपना Correct. फिंगर में कुछ पेंट वेंट ला के फिर पुट सम इम्प्रेशन, ठीक है, इज अ बडिंग आर्टिस्ट। Correct. अभी जो है एक रिवोल्यूशन चला है कि छोटे छोटे बच्चे, दे विल डू सम आर्ट, गुड आर्ट और बैड आर्ट, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, वॉट एवर आर्ट दे विल क्रिएट, उनके पेरेंट्स या दे देमसेल्फ, they will put it in Facebook or any social medias. Their friends, their relatives, their known people, they will like it. Good work, fabulous, whatever it is. अभी इनको देखने के बाद the person, the kid who has done it, the budding artist who has done it, they will think that he has done a good job. वहीं पे they will make a blunder. The moment they will start thinking they have become a known artist or they have become a good artist, their intention level or their interest level of learning will decrease. उनका जो सीखने का जो इच्छा है वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। ओके, सही है। सो आई विल ऑलवेज से, हाँ आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम में यू शुड पुट, इट्स
इट्स नॉट लाइक आपको वहां पर भी एक्टिव होना जरूरी है, बट सिलेक्टिव वर्क्स, आप कुछ कुछ वर्क भेजिए। इट्स नॉट लाइक कि आप पहले पहले आप सीखिए, पहले आप, आजकल तो ओपन है मार्केट में, यू कैन सी गुड आर्टिस्ट वर्क एनीवेयर, you try to learn from them. It's not your each and every work you have to post post it on Facebook, or हाँ अगर आप उसको पोस्ट करने के बाद if you are learning it, then it is fine, but most of the kids or most of the budding artists, they will think कि हाँ और problem is आजकल जो budding artists, many people, they will come and they will start crash courses. Maybe they themselves doesn't, they do not know much about art. They will start crash courses. They will say that within 3 months I'll you will become a master of oil paint, or you will become a master of portrait, or you will become a master of acrylic. You will learn everything. It is next to impossible. It never happens. Right, I get it. Okay, so in this 3 महीने में कोई आर्टिस्ट नहीं बन जाता, हर घर में आर्टिस्ट होते हैं। Yeah, yeah, पहली correct. बात तो, हाँ पहली बात तो आर्टिस्ट होने के लिए कई जन्म लगते हैं। वी आर अ गुड पेंटर। Right, I agree, ओके, agree. सो हाँ, सो आपको मान लीजिए आजकल ग्रिड पैटर्न्स में लोग देख के, किसी का फेस देख के ग्रिड में बना के, देन दे विल सी कि मैंने जैसे आपका फेस देखा, आपका फेस देख के मैंने ग्रिड में डेवलप किया, तो ऑटोमेटिकली योर फेस विल बी लुकिंग लाइक अ, सो दैट एनीबॉडी कैन डू। फॉर दैट यू नो, नो नीड टू बिकम एन आर्टिस्ट, नो नीड टू गिव दैट मच टाइम इन आर्ट, एनीबॉडी कैन डू इट। आप यूट्यूब में जाकर सीख सकते हैं, फॉर दैट आपको पढ़ने का जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपको, इफ यू वांटेड टू बी अ गुड आर्ट हैंड इन आर्ट, यू गिव टाइम, इम्प्रूव योर, इंक्रीज योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स। आपको, जैसे आप अगर बैठे हैं अभी, तो मैं आपको देख के पेंसिल लेके, आई शुड बी एबल टू स्केच यू विदाउट एनी ग्रेट लाइंस और वॉट एवर इट इज। So that level you should be in. So that level, when it comes, when you are, when your practice is good, when your observation skill has been is developed, when your anatomy is good, so there is always a process. Give time there. It's not like कि आपने simply कुछ भी बनाया and simply posting it on Facebook, चलो Facebook में कोई डाल देते, तो आजकल तो likes और shares, और आजकल तो monetization, you will, people started earning also. So, but I do not prefer, even I tell to my daughter also, do not ever do it. So I also do not post all my works in Facebook or Insta. Few Mm, works only I post. I understand. Artists should always prefer finesse more than fame. I think fame will come to them directly, True, but finesse will come out true. of practice and a lot of patience and time. So I see what you're telling is I can totally relate to and understand. Posting your work on social media will give you a lot of fame, and probably with that fame you get addicted to it and stop practicing it in the right sense. They start making a lot Correct. of drawing in the same way, but are they bringing finesse to it? Are they making it rich? Is a questionable thing. So I totally agree to what you say. And I also have one more observation that I've made is I'm sure you also know it much better. Is there are a lot of people replicating the art of the well established artist. How do you see it? And they and in that See, I'll I'm sorry, I'll just finish this question so that it will be even easier for you. yeah, no, And they start presuming themselves to be very established artist after being able to replicate it. I'm sure not in the 100% finesse of the actual artist, but somehow they it's kind of a psychological thing, or what is actually happening and how healthy is that practice? see, when why this thing happens? First, we need to understand. First is, एक किसी बच्चे को या तो फिर किसी भी यंग आर्टिस्ट को, when they come to this field, ठीक है, when they start giving time in art, so first thing what they will try to do is, गूगल में सर्च किए, कुछ आर्ट वर्क्स मिला, हाँ
ये अच्छा लग रहा है, इसको बनाते हैं एंड विल हैंग इट ओवर होम, घर में इसको बना के फ्रेम करके विल कीप इट। दैट कुड बी वन ऑफ द मोटिवेशन। कुछ लोग बहुत से आर्टिस्ट लोगों का मतलब जो सीनियर आर्टिस्ट है, नॉन आर्टिस्ट है, उनका वर्क को रेफरेंस में रख के दे विल डू देयर ओन वर्क। सी आई विल से if you are referring to any artist work, that is fine. I will not say you should not do. If you are doing it to improvise your skills, then it is fine. If you are thinking replicating once one artist's work and you will think that you have become an artist, that is wrong. अगर मैं I can also do MF Hussain sir's work. If somebody will give me the reference, 100 out of 100% I can copy. मैं क्या MF Hussain sir बन जाऊंगा? नहीं. नहीं. It can never happen. सी उनका जो वर्क है दैट इज प्राइसलेस। पहले मुझे भी सब उतना समझ में नहीं आता है मैं क्वेश्चन सर वर्क में ऐसे क्या है, लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग मच टाइम इन आर्ट, अभी मुझे उनको समझ में आ रहा है। सी द वे ही हैज यूज्ड द ब्रश, द वे ही हैज यूज्ड द रेड कलर, द वे द प्लेसेस वेयर ही हैज यूज्ड द येलो कलर, व्हाइट कलर, द बोल्डनेस ऑफ द कलर टच, वो दैट इज एक्सपीरियंस एंड वो कोई अनाड़ी आदमी जाके वो नहीं कर सकता। ठीक है, अगर देख के कोई अगर करते भी हैं तो एम एफ हुसैन सर का जो थॉट्स है, द थॉट्स व्हिच ही हैज गिवन इन हिज वर्क, ओके, राजा रवि वर्मा सर, द थॉट्स व्हिच ही हैज गिवन इन हिज वर्क, दैट कैन नेवर बी कॉपीड। वो तो मैं उनका आर्ट वर्क कॉपी कर रहा हूँ, है ना। सो आई थिंक इट इज जस्ट डिपेंडिंग ऑन कि मैं किसी आर्टिस्ट का वर्क देख के मैं उनको कॉपी करके आई विल बिकम एन आर्टिस्ट, दैट इज 100% रॉन्ग। आई विल नॉट सपोर्ट टू दिस पॉइंट। अगर आपको स्किल डेवलप करना है, हाँ ठीक है, आप देख के बनाइए, आप उनका वर्क देख के बनाइए, आप स्किल डेवलप करिए, आप देखिए कितना हाउ क्लोज यू आर कमिंग और व्हाट ऑल द प्लस और माइनस और मिस्टेक्स यू आर डूइंग, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। बट हाँ, इसमें इसमें क्या होता है जब हम लोग व्हेन वी आर डिपेंडिंग ऑन एनी अदर आर्टिस्ट वर्क, हम लोग में खुद का जो क्रिएटिविटी है ना वो खत्म हो जाता है। Getting. ठीक है, तो Yes. उसके लिए यस, तो मैं बिकॉज आई एम डिपेंडिंग ऑन अदर आर्टिस्ट वर्क, Correct. मैं उसी को अब क्या है कि मेरे को अभी इफ आई एम इनटू आर्ट, मतलब मैं इसमें इसी में से मेरे को कुछ पैसा कमाना है इमीडिएटली, बहुत फास्ट पैसा कमाना है। मैंने गणेश जी का एक किन्हीं का वर्क देखा, मैंने गूगल में देखा और एनी चैनल्स में और एनी मीडियाज में, इफ आई हैव सीन एनी गणेश जी का वर्क, आई विल सी दैट, आई विल रेप्लिकेट इट ऑन कैनवास, आई विल सेल इट। आपका कमर्शियली तो आपने कर दिया, लेकिन आपका इफ आई लास्ट यू व्हाट वैल्यू एडिशन you have got from that work, nothing। Right. Other than the monetary gain, कुछ नहीं. मॉनेटरी गेम हुआ बस, मॉनेटरी गेम तो पैसा तो आप कहीं से भी कमा सकते हैं, पैसा ही कमाना है तो कहीं बहुत जगह सोर्स है पैसा कमाने का, लेकिन आप अगर आपका अगर मोटिव है आर्ट में, फर्स्ट ट्राई टू बिकम अ गुड आर्टिस्ट। अच्छे आर्टिस्ट बनने के लिए आजकल वही हो गया, सब एवरीथिंग बिकेम कमर्शियलाइज्ड, सब Right. कुछ कमर्शियलाइज्ड हो गया। तो फर्स्ट आई थिंक मेरा वो है कि फर्स्ट यू शुड बिकम अ गुड आर्टिस्ट। फर्स्ट आपको यू हैव टू मतलब you have to give your 100%, you have to be patient, you have to hard work, you have to do daily practice to become a little bit of a good artist, I get so it. be prepared for that। it's not कि किसी कॉपी वर्क करके। I agree. So when it came to monetary, now let's talk about revenue. So how does an artist make money? Because see, you are into a profession, so you have to feed yourself and you have to take care of your needs and you're dependent. How do you generate revenue? What is the source of income? See, source of income, if you ask me, it is tough. Initially it was tough, initially it was tough to generate revenue out of it, because since I was never gone through any art education or anything, I did not
I have not gone through that environment actually. कि आर्टिस्ट वो एक कॉलेज में जो बात चलता है ना कि भाई अभी ये तो बीएफए या तो फिर एमएफए तो कर ली, इसके बाद क्या करना है, तो वो जो स्टूडेंट्स के बीच में जो डिस्कशंस होता है ना, दैट इज आल्सो वेरी प्रोडक्टिव। ये काम करते हैं हम लोग, विल डू दिस थिंग, एटलीस्ट यू विल गेट अ चैनल। मेरा तो वो भी नहीं था, हाँ हाँ, राइट, एक सिमिलर है ना। नेटवर्क मिलता है। राइट। आई डिड नॉट हैव द नेटवर्क आल्सो, मैं आई डिड नॉट इवन न्यू एनी आर्टिस्ट एज वेल, हार्डली फ्यू, one or two artists I knew. The only artist I knew was my father. ओके। तो बाकी लोग का जिनका मेरे फादर भी एक्चुअली ही इज अ हॉबी आर्टिस्ट, सो ही वाज वर्किंग। तो बाकी जिन लोग का नाम सुने थे इन टीवी और दैट दैट वाज द ओनली थिंग। तो नाउ व्हेन इट कम्स टू अर्निंग, सी अगर पहले पहला चीज तो है कि पहले आपको अपना वर्क अच्छा करना पड़ेगा। ग्रेजुअली आपको चैनल ओपन होंगे, यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम, बी पेशेंट फ्रॉम डे वन, फ्रॉम फर्स्ट ईयर। अगर आप सोच रहे हैं कि आप लाखों में एवरी मंथ, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दैट। अगर आपका वो टेंडेंसी है कि मेरे को फर्स्ट मंथ से मेरे को 1 लाख रुपए कमाना है, तो मे बी यू कैन गो फॉर क्राफ्ट्स और समथिंग, नॉट फाइन आर्ट्स और दिस थिंग पेंटिंग्स। देयर आर मेनी अदर थिंग्स आल्सो, क्राफ्ट आजकल कमर्शियली बहुत कुछ क्राफ्ट्स आर्ट्स में आते हैं, और in those fields you can go. But in art field, yes, what I do is I do many workshops. I have my own studio where I create work for many government infrastructures, and customized work I do for exhibitions. I do work. I have my own institute as well where I teach students. So yeah, these are the things I do parallelly, and I work with many NGOs as well. So these are all the things which I do to run my income, family needs, and all. That's nice. That's nice to know because uh, art is a field that is very unexplored according to us. Like we are very Yes. alien to the field. So I Yeah. know of children or youngsters who want to become artists, but they are not able to convince their parents that we can make a livelihood out of art. I'm sure See, we had a conversation once, yes, right? yes. You and me were In having art, so. yeah. One more time, I'll just Yeah, yeah. add into this. Yes. In art, also there are many fields, many divisions. Okay. Visual art, okay, Hmm. visual art में भी आपका जैसे स्कल्पचर हो गया, पेंटिंग हो गया, है ना। Hmm. तो ये सब विजुअल आर्ट्स में आ गया आपका। अभी आप अगर इफ यू गो टुवर्ड्स ये इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, सी दोज आर आल्सो द फील्ड्स वेयर यू कैन गो, वेयर यू Hmm. कैन डाइवर्ट योरसेल्फ। आपने No. बीएफए करने के बाद देन यू कैन डाइवर्ट योरसेल्फ। Hmm. So those are also the fields. It's not like कि आपको फुल टाइम आर्टिस्ट बन के ही आप रेवेन्यू you have to earn your livelihood. You can certainly make your fields in that way. You can go to animation, you can go to automobile section, you can go to textile design. Textile designing बहुत scope है, and they are also paying a good amount of money. So there are fields, but yes, you need to scratch it. Right. There are Right. fields. Yeah. Correct. Exactly. Fashion designing, Fashion. Yes. yeah. Even animation, like you said. Animations, yes. Yeah. And even I'm Animation. teaching to few, teaching to few interiors and architects as well. Oh, nice. That's So, interesting. that there are fields. It's not like fields are not there, but you need to scratch it. You need to keep patience. You need to no subjects. Not see what I will not say कि any subject is bad. In Sanskrit, Sanskrit is a very good subject. True. True. Very much. Okay, so we deny it because we have not gone through it, or uh,
we have not given that much importance to Sanskrit. Right, क्योंकि we have हमारा not. एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम संस्कृत अप टू सर्टेन क्लास वी स्टडी, वी डू नॉट स्टडी फॉर थ्रू आउट अवर कैरियर, Right, right. है ना. तो every all the subjects are good. The only thing is we have to divert ourselves accordingly. Correct. We have. कबड्डी कबड्डी हाउ कौन सोचा था कि कबड्डी will become like second IPL. Right. Correct. तो Yeah. आई थिंक कोई सब्जेक्ट और कोई फील्ड खराब नहीं. Correct. So बस dedication होना बहुत important है, is what I Yes. get out of it. So now let's move forward. See, we know that India has a very rich culture of art and various art forms. You every 50 kilometers we can see a new art form in India, Yes. just like we tell it for a language or a dialect. So uh, we know about the famous ones. Would you like to tell us some of the unfamous ones, more of Chhattisgarh, because you belong to Chhattisgarh and you have been an artist there in Chhattisgarh. So if you can tell us more about. देखिए अभी when we speak about art forms, every state has their own art forms, है ना. जैसे आप कलकत्ता में जाएंगे, if you go to West Bengal, पटचित्र, okay, then Kalighat paintings, okay, then Gemini Roy style, okay, then if you go towards north, वहाँ पे मधुबनी, है ना. If you go towards south, mural, then Tanjore painting, okay. So like this, kalamkari, okay. So like this, there are every state has their own art forms. All the art forms are unique. Whenever we see any art form, जैसे मधुबनी को आप देखोगे, immediately you will understand there is a मधुबनी. अभी when I speak about छत्तीसगढ़, पहली बात तो है छत्तीसगढ़ हमारे छत्तीसगढ़ को whenever we speak about छत्तीसगढ़, whenever suppose if I'll ask you to come to Chhattisgarh, okay, so what motivates you? The places which motivates you to come to Chhattisgarh is the art form, the tribals, okay. Right. I हाँ, agree. ट्राइबल, हाँ, है ना. तो ट्राइबल एक समय में ऐसा भी था जब people used to hesitate to come to Chhattisgarh because of Naxalite attacks, robbery. There were many incidents which has happened, but now the situation is changed, है ना. Now the people are devoting much time in education. The women are coming forward to earn their livelihood. They are creating the artifacts. अभी छत्तीसगढ़ में one very famous artwork that is which we all know, that is Dokra art. Dokra art is actually not from recently. Dokra art is existing from almost like 4,000 years ago. But previously hardly few families they used to spend time, और उनके पास उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था, और बनाते थे, बेचते थे, वैसे उनको घर चलता था. अभी ढोकरा आर्ट it has come to a such level. Just now I had been to Hyderabad, and there was an exhibition. So my artwork was nominated there. So I worked on tribals actually, and where I showcased the Dokra artwork as well. So immediately people can able to connect it. Wherever they will see the Dokra art, they will immediately connect it. So, is it something related to Chhattisgarh or something? So then I said yes, it is related. Then I told them the story and all, why I created, what is the story behind it. Now, if you ask me about unexplored art or explored art, okay. So every artwork, if you ask me personally, every artwork is explored, every artwork is unexplored. It depends upon person to person, artist. Now, if you go to villages,
interior villages and all. Many small artworks you will see. Okay, so which they will, from which they will decorate their home. जैसे आप घर में जाएंगे ना, उनका दरवाजों के सामने वो लोग डेकोरेट करते हैं, उस मान लीजिए कोई एक स्पेशल कोई ऑब्जेक्ट है, उसको दिखाने के लिए भी, सपोज एक एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट स्नेक, उसको दिखाने का भी एक अलग तरीका है उनका आर्ट फॉर्म से, ठीक है। हर एक गांव का एक उनका खुद का कहानी होती है। किसी किसी गांव में अगर आप जाएंगे तो वो लोग नाग देवता को अलग रूप में पूजते हैं, दे विल वर्शिप नाग देवता इन डिफरेंट फॉर्म। उसके पीछे भी कोई एक स्टोरी रहता है। सो हाउ these stories they will create, no, that is very interesting. So all these things are which I'll say it is unexplored, but at one point of time it is explored also, because the person who has done it, but the person who has created that art, he is already exploded. It is unexplored for us. Yes, Correct. that's true. That's true. So I, that is a, yeah. yeah, yeah. Thank you. I was just going to thank you for giving us so much of information on Dogra art specifically, because I have a personal experience of living in Chhattisgarh for a good amount of time of my life. So uh, I could connect to it instantly. So thank you for bringing that back. And so now and we have been talking about, historically how art was there. Now there is a new kind of technological development, I would say, but I don't know whether it is a positive, like a boon or a bane to an artist. Let's talk about artificial intelligence. I'm seeing it generating a lot of fantastic artwork, but for me, it is fantastic because I am just a very hobby kind of an artist. I cannot even claim myself there. I'm just a hobby drawing maker, something. But for you, as a well established professional artist, how do you see artificial intelligence? What does it bring to you? Is it a threat? Whatever No, you feel. Okay. it's not a threat. Okay. It can be a threat for the companies who will run this artificial intelligence, that those companies might can become a competitor Mm-hmm. for themselves to get these many followers, or not for us. Okay. So it's a good question actually. Artificial intelligence end of the day at last क्या करेगा? वो यहाँ वहां से पिक्चर्स उठाएगा, max to max they will modify, they'll add some emotions, little bit here and there, nothing more than that. The creators are the artist mind. The person who is creating, the person who is having the artist mind, he is the creator. He is the creator of that artificial intelligence. Humans are only the creator of that AI, right? Right, true. So the tones, the color tones which we play, the thoughts which we add, that I can add the senior artists who have done it. Those artists, the artist can add. But artificial intelligence, yes, one point of time. See, if I'll ask you now, print. Okay, now if you love art, okay, now if you want to decorate your home or your commercial space with an artwork, if you have predetermined कि हाँ मेरे को यहाँ पे एक अच्छा सा ओरिजिनल पेंटिंग लगाना है, ठीक है, मे बी यस, बजट डज मैटर, आपको 5,000 का लगाना है कि 50,000 का कि 5 lakhs का, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। बट वॉट एवर इट इज, आपको उसमें ओरिजिनल वर्क ही लगाना है, ठीक है। मे बी द नंबर ऑफ पीपल आर लेस हु अप्रिशिएट दोज हार्ड वर्क, तो वो लोग दे विल ऑलवेज गो फॉर द ओरिजिनल हैंडवर्क, एंड ओरिजिनल आर्टवर्क इज एन एसेट फॉर एनी होम। अभी तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हो गए, बहुत सारे कंपनीज हो गए, बहुत सारे चैनल्स तो आई वुड नॉट से, जिन लोग क्या करते हैं कि ये आर्ट वर्क को खरीदते हैं एंड दे विल अगेन सेल इट इन crores and crores, maybe the artist
आर्टिस्ट से मान लीजिए दे विल परचेज इन एक्स अमाउंट, देन दे विल अगेन सेल इट, so that all these things are started. So I don't think कि artificial intelligence हाँ कुछ up to certain percentage it can hamper. जिसको अगर डुप्लीकेट ही चाहिए तो डुप्लीकेट चाहिए तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, फिर आप गूगल से ही निकाल लो ना, बैठ बैठ के एआई तक जाने का भी क्या जरूरत करेक्ट। है ना। डुप्लीकेट का तो कोई वही सोल्यूशन ही नहीं है। हम्म। और बाकी आई डोंट थिंक एआई शुड बी अ थ्रेट फॉर artists who are who are devoting 100% time in art. That should not be a threat for them. दैट्स इंटरेस्टिंग टू नो And एक्चुअली। AI में there is I have come to know कि AI में then now the robots and all will also come and they will also start the painting. They will also use the brush and all. But that is also there is always a difference between अगर आप मान लीजिए if you are doing a folk art. I'm just giving you an example. आपके साड़ी में जो आजकल जो हैंड पेंटेड जो प्रिंट्स आते हैं, ठीक है, अगर वही प्रिंट को आप मशीन से कराएंगे और वही प्रिंट को आप हैंड से कराएंगे, हम्म। you will see the beauty of that rawness of and the texture which comes out from that hand, हम्म। that will be much better than machine work. दैट्स ट्रू। Okay, so अगर वो मशीन भी आता है तो that texture and all which we play with the hand, वो आना it's not that easy. So let's उतना द थ्रेट नहीं है, थोड़ा बहुत थ्रेट है बट दैट्स ओके। Challenges are always there. राइट, जैसे उसका नाम ही है, इट्स आर्टिफिशियल, सो इट्स आर्टिफिशियल Yes. एंड ओरिजिनल So, हैज इट्स ओन yes, yes, you very ब्यूटी। correctly said artificial. Yes. Yes, and originality stays for time tested, because even when we talk about artists, like you mentioned, Raja Ravi Verma sir, he is no more with us today, but his art and his True, artworks true, are still with us, and originality is time tested. It shall stay with us forever, even for tribal art for that matter, be it Maharashtra's Warli or Dogra art. It has been with us for time tested, so originality will stay forever, is what I think. true, true, true. Correct. So, coming back to our previous topics, few is establishing yourself as an artist. Now there is a play of brand. So how do you establish yourself as a brand? I know whatever you have told, I have taken it, I've assimilated the thought. But see, for example, if there is a musician, he would like to have a label for himself, or likewise for an artist, the name can be a brand or the studio can be a brand. So what is the process of going through it? I agree that it takes a lot of time, and but there has to be a channel also of doing it, right? So if you can give some insights in it, it will help the youngsters who are really wanting to pursue this as a profession. They'll walk on this path. सी पहले तो आप हमको ये तय करना है कि हमको एक चाइना ब्रांड बनना है कि इंडियन ब्रांड बनना है। Gio. ओके, सो Okay. Mm-hmm. अगर आपको चाइना ब्रांड बनना है तो शॉर्टकट Mm-hmm. मेथड्स आर ऑलवेज देयर। गो फॉर चाइना ब्रांड, it will not sustain for a longer time. You will break at one point of time. If you want Mm-hmm. it to become a made in India brand, then spend time. Okay. आपको you have to spend time in the market. You have to build your profile. Mm-hmm. You have to more than building your profile, you have to improvise your profile. Right. अगर मैं मेरा अगर वर्क खराब हो, अगर मेरा वर्क खराब हो, मैं जितना भी 100 of exhibitions also I would have done, तो उसमें भी end of the day people will say नहीं, his work is so so. Correct. If Correct. your work is good, if you are following the correct path, if you are uh, uh, following a principle in your life, आपका ब्रांड होना तय है। You have to project yourself at one point of time. देखिए एक जो अच्छा आर्टिस्ट रहता है ना, he is not a, मैंने जो सुना है वो लोग उतना मार्केटिंग में ध्यान नहीं देते, उनका काम उनका मार्केट तक। ट्रू, सही बात है। उसमें उसमें थोड़ा टाइम लगता जरूर है, आपको टाइम देना पड़ेगा, अपने काम में टाइम देना पड़ेगा, आपका ब्रांड बनने के लिए टाइम देना पड़ेगा। आपने जब बोला कि मैं एक ब्रांड हूँ तो मुझे सुन के वो अच्छा लगा।
Yes, I became a brand or whatever it is. yes, yes. But it's not like that. Yeah, I'm also still learning. I'm still working to improvise my work. Right. Yes, few people knows me. That's it. Uh, Nothing more than that. So, yes, we but know you. Yeah, uh, we come from Chhattisgarh, so we know you already. I know I don't know about Pan India, but of course, people in Chhattisgarh, of course, know you really well. Rahul Datta is a name yeah. for an artist that is really known. So, so proud to So, have you in my network. That's the best part. Yes, and thanks for that once again. And see, branding for that you have to. My only mantra to make your brand is improvise your work and demonstrate it. If you think your work is good enough, now mm-hmm. it is the time to demonstrate your work in the media or in the open market. Demonstrate your work. Try to understand your work, what you are trying to do, what you are trying to convey from your work. Okay, you should able to explain your work. It's not like कि हाँ बना दिया यही है. तो आपको आपका अपने वर्क को एक्सप्लेन करना आना चाहिए. Right. So yes, so many don't get nervous. Ups and downs will come. That is the one more mantra which we should follow in every path actually. Okay. तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे ब्रांड होगा. आपका वर्क अच्छा होगा तो ब्रांड भी हो जाएगा. True. सही बात है. That's true, actually. So, coming to a very important point now, I am sure there will be a lot of people who will now like to learn from you. So, how do they contact you? Learn. Ah, so see, I'm running a institute. It is in the name of Riddhi Kala Mandir. So Riddhi is basically my daughter's name. Okay. Yeah. So I kept my institute in her name. So Riddhi Kala Mandir, and they can reach me out. I have a Facebook page also, but again I'm saying I'm not very good in marketing. I do not upload many. I'm not very prompt in updating my Riddhi Kala Mandir page, Hmm. and they can reach me out through my page. They can even share my Facebook and Instagram links as well. Sure. They can go through it. I'll share my contact number also, so they can reach me out through that. And few principles which I follow in my institute. That is, I give 100% importance to sketch first. Okay. So unless and until your base is strong, so we should not jump over to color modes or color mediums immediately. So I'm little principle oriented, but yes, if you want to understand, if you want to understand the process of art, if you are serious enough, then you can reach me. Definitely. I'm sure there will be a lot of people reaching out to you. I'm really sure about it because you're not promising 3 months may mastery. So, you're quite original and people do appreciate originality. I'm Yeah, And thanks. thank you. We have come to the end of this episode, but we'll make sure that we connect back again for a lot of other insights in the field of art. Yeah, sure. Thank you. Thank you, Let me. Rahul. Thank you for being Thanks. here. Yes, do check out our website. It's prajasetu.in. And, Yeah, sure. I'll do that. yes, and thank you And so all much. the best for your journey. Thank you. And please let me know whenever it comes. So I'll also enjoy it. Thank you. Thank you. Definitely, Rahul. Thank you. Thank you for being there. Wish you all the very best and Jai Hind. Thank you.